नमस्ते नमस्ते। आ गई है अतिका कहानी सुनाने। आज फिर से सुनेंगे पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र से एक मज़ेदार कहानी। अच्छा बच्चों, आज मैं एक थोड़े अलग तरीके से आपको कहानी बताऊंगी। थोड़ा सा बदलाव है आपको, लेकिन ध्यान से सुनना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये तरीके से कहानी में मज़ा आ रहा है कि जिस तरह मैं पहले बताती थी, एक एक वाक्य का अनुवाद करते करते, 1 सेंटेंस इन इंग्लिश 1 सेंटेंस इन हिंदी। विच वे आर यू एंजॉइंग? कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है? आज मैं पूरी कहानी एक साथ हिंदी में करूँगी और फिर पूरी कहानी अंग्रेज़ी में सुनाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ बंदर है ना, और ये एक पक्षी है। तो यहाँ इनके चेहरे क्या बता रहे हैं? ये आ गए हैं गुस्से में, क्रोध में। क्यों क्यों क्यों? अरे क्या हुआ? कोई गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या ये आपस में गुस्सा कर रहे हैं? आँखों को देखो, किसको? ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि किसी और को? हाँ, इस पंछी को देखकर शायद क्रोध आया। सही सही, बिल्कुल सही। तो ये जो पंछी है, इनके साथ इन्हें क्रोध हो गया, गुस्सा आ रहा है इनको। क्यों? कहानी यूँ है कि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बहुत तेज़, और ये भीग गए, पूरी तरह से भीगे भीगे, इन्हें ठंड लग रही है। अब ये जो पंछी है पेड़ पर बैठी है, उसने देखा, और उसने क्या देखा? उसने देखा कि ये जो बंदर हैं वो गुंजा के फल से चिंगारी निकालकर ऐसे सोच रहे हैं कि उसको यूँ रगड़ के उसमें से आग प्रकट करेंगे अपने आप को गर्माहट देने के लिए। तो ये सोच रहे ये क्या कर रहे हैं? ये तो गुंजा के बीज हैं, गुंजा के बीज। ये गुंजा के फल में से, क्योंकि ये लाल है, इसका मतलब थोड़ी है कि इसके अंदर आग भरी हुई है कि इसमें से आग निकल आएगी। तो उसे रहा नहीं गया, ये सोचती है मैं जाके इनको सलाह देती हूँ, इनको शायद पता नहीं है। तो उसे थोड़ी अंदर हंसी भी आ रही है, फिर अपनी हंसी को थोड़ा संभालती है और टुक 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 जाती है उनके पास और उन्हें कहती है, अरे ये तो गुंजा के बीज हैं, इसमें से कोई चिंगारी नहीं निकलने वाली है, मत करो ऐसे। थोड़ा ज़ोर से बोली वो। फिर वो ध्यान नहीं दिया शायद उन्होंने, तो वो जाके कहती, अरे अपना समय मत व्यर्थ करो, जाओ जाओ, कोई अपने लिए गुफा ढूंढो, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इतनी तेज़ बारिश है, तुम ये क्या आग बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो ये जो बंदर थे, इन्हें इसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चलो मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ, तो आपको ये शब्द ध्यान में बैठेंगे। देखते भी जाओ, ध्यान से सुनते भी जाओ। तो ये जो बंदर थे ना, बहुत चिढ़ गए। ठीक है, ये बंदर बहुत चिढ़ गए इस पर। क्यों? एक तो भीग गए थे, भूख लगी थी उन्हें, और उसकी ये सलाह मांगी भी नहीं थी, हाँ वो दे जा रही है। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने कहा, शो, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। लेकिन ये जो चिड़िया थी, ये जो पंछी था, ये तो उसने जैसे ठान लिया था कि मैं तो इनको बता कर ही रहूँगी, ये तो गलत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किए जा रही थी वो उनके मना करने पर। अब उन्होंने तो इशारा कर दिया ना, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, लेकिन ये इसके तो समझ ही नहीं आया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। बोला, रुको रुको, इसमें मत करो, ये व्यर्थ है, बोले जाए बोले जाए। तो ये बंदरों को और गुस्सा आया और बोला, तुम जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। लेकिन ये तो लगता है इसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको इतना क्रोध से वो कह रहे हैं, उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। तो ये तो और आगे फुदुक 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 के गई आगे, और उसने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि मत करो, ये व्यर्थ है। अब तो इतनी 4-5 बार इस चिड़िया की बात से इनका तो क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। बहुत गुस्सा आया और एक बंदर ने तो यूँ उसकी गर्दन पकड़ी और ये जोर से पटक दिया उसको। अरे बाप रे, सोचो क्या हुआ होगा, बताओ
क्या हुआ होगा? इतना ज़ोर से धक्का, गर्दन से पकड़ा, एक ही छोटी सी जान, उसको यूँ पकड़ा और पटक दिया। हाय, क्या हुआ होगा उस बेचारी का? चोट लग गई बेचारी को। अब बोलो, दोष किसका? इन भीगे भूखे बंदरों का कि इस चिड़िया का? कहानी का अंत क्या सिखा रहा है? सोच के बताना, ठीक है? चलो, let's listen to the story in English. Yes, here we begin. The angry monkeys. Angry. Why are these monkeys angry? Let's find out. What do you see here? They're angry and look carefully at their eyes. Are they looking at each other? There's another third monkey over here. What do you think? They are angry at each other? Or does the picture show another character? Yes, this is this bird over here who is creating the problem. Let's jump into the story. The bird had never seen anything so funny in life. Oh. Here the story says that this bird is seeing something funny. What is she seeing? She saw what? A group of monkeys was trying to light a fire. Oh, why do you need fire? Fire gives us light, warmth. So what is happening? Why do these monkeys need fire? It was pouring cats and dogs, and the monkeys were shivering from the cold. Oh, I see. Pouring cats and dogs means it's raining heavily. And the monkeys, when you get wet in the rain, what happens? You feel cold. Do you think monkeys have umbrellas? What do you think? No. So they've become wet and they are shivering in cold, right? They were trying to light a fire with gunja fruit. These are tiny fruits the size of a rajma bean, and they are deep red in color. And there's a little black part also. So that's how a gunja fruit looks. So what is this bird thinking? She's thinking, listen carefully. Just because the fruit was red did not mean it would ignite a fire. Yes, she's thinking that they are thinking that it is red in color. And that means it has the capacity to bring out fire from it. What fools! These are the thoughts in the mind of this inquisitive bird. Okay, so she's feeling like, what is this happening? She's feeling funny. She's thinking that's too funny, and she's laughing also, and she's wondering also that she needs to help them out. They're just on a wrong track. She's becoming too inquisitive, too much interested in other people's matter. Let's see. Controlling her laughter, she hopped down from her nest. Okay, she's thinking that what is wrong over here, and she can't stop her laughter. She's giggling away inside properly, and she hop, and she goes down from her nest. And she's talking to them. These are gunja fruits and not embers of fire. She squeaked as loudly as she could. What is she telling them? As I just explained to you, that she's telling them these are fruits, gunja fruits. Okay. They are not filled with fire. They're not embers of fire. Embers are those coal, that burning coal, which has the potential, which has the capacity to create big fire. It does not have fire. Yes, they are just fruits, red in color. They cannot give fire. So she's giving them advice. Then she says, don't waste your time on this. Go and find a cave to protect yourself from the rain and cold. She's got lots of advice for them. She's giving them, okay. Then where does she go? Oh, she's not gone anywhere. She's still there. What does the story tell us? The monkeys were irritated with the bird. My God. Nobody's asking advice. Why did you go and interfere, right? She went on. So they got irritated. They didn't like it. They were already wet, hungry and frustrated. It was raining, so they had become wet. They didn't have food, so they were hungry.
Obviously, they will get more frustrated, they'll feel more anger. They had no desire to take advice. They didn't want to listen to anyone. And what did they do? Go away. They tried to shoo her away. Shoo! Get lost. They are so irritated by this. And what do you think the bird did? The anger is just going on increasing. The bird ignored their rebuke and hopped closer to the ground to give them her motherly advice. Oh my God, this bird, she's too much wanting to, correct them. This is very dangerous. Watch out what's happening. Stop it. There's no point in doing this. My God, she's just behind their backs. She just wants them to listen to them. And what do you think? They're going to listen to her? The monkey scowled at her and told her to get lost. The anger is increasing. And determined to stop them, the bird went closer. She's determined. She has decided. Determined means she's decided that she's going to stop them from doing this foolish act. But do you think this is going to help? Who's being foolish over here? She chided them again, but now the monkeys had lost their temper. Again she chided means, again she's poking her nose and, like shouting at them, getting angry at them, then don't do this. And this is the last time. I think this is the fourth time she, went on with it, trying to advise them. One of the monkeys caught her by her neck and flung her on the ground. Oh my God, what did he do? He picked her up. Not picked her up, picking up is gentle. He caught her and with great force, he just flung her, threw her on the ground. Oh my God, what must have happened? The poor bird was grievously injured for trying to help the monkeys. Grievously injured. Very bad condition. She had a bad fall. She was badly injured. Obviously, she's going to get hurt. She probably hurt her eye, her beak, her wings. Something must have broken. Poor thing. And for what? What did she get out of this trying to help the monkeys? Yes. What do we learn from this? We must have learned many lessons. But one of the lessons our author shares is, it is foolish to give advice to deaf ears. So watch out. Watch out when we are tempted to share our advice to people who don't want to listen, who have deaf ears. Deaf ears means they just don't pay attention. And so watch out. It is a sign of danger. All right. How was it? Let me know in the comments, and do tell me, if you would be part of the story, which character would you be playing? Yes, अगर आप इस कहानी के एक भाग होते तो आप इस कहानी में कौन से पात्र बनते? मुझे कमेंट्स में बताना, और ज़रूर बताना इस तरीके का जो आपने वीडियो देखा, पूरा एक हिंदी भाग और पूरा अंग्रेज़ी में आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।